Faraz, you will start or shall I? Yeah. Good evening, everyone. It Can't hear you. now. Yeah, Yeah. Good evening, everyone. It again gives me immense pleasure to welcome you all for another, I would say, very important and exciting episode on diabetes foot. Why it becomes very important because we all know that because of diabetes, the most important complication which we all are worried about is, of course, the cardiovascular disease. But at the same time, it is very, very important for all of us to look at the most other important complication, which you will be surprised that is diabetic foot. And diabetic foot infections consists of almost 60 to 80% of reasons for diabetic foot amputations for loss of feet across pan India. So to speak on this, today we have, I would say, a very exciting panelist with us. We have Dr. Vijay Vishwanathan, sir, a very well-known figure, head of the department and chief diabetologist at MV Hospital for Diabetes and Research Center from Chennai. Very good evening, sir. fine, Faraz. We have my fellow colleague, Dr. Ashu Rastogi. He's an associate professor of endocrinology from PGI Chandigarh. His interest is into foot, and he's done a lot of work in foot as well. Good evening, Dr. Ashu. Good evening, Dr. Faraz. And to complement it, we have with us Dr. Krishna Chaitanya, senior consultant podiatric surgeon from Max Hospital, Telangana. So I think it is a group of the physicians and the surgeons who are going to take us through it. So over to you, Dr. Vishwanathan, sir. Thank you, Faraz. I think I'm going to speak mostly in English, and I leave Yeah, it to my please. colleague to talk in Hindi. So the first thing is we should understand. You said diabetic foot is a very common problem. So the question which I want to answer first, before I ask Ashu Rastogi a question, is why do people with diabetes have an increased risk of getting foot infection? So you said 60 to 70% have foot infection. That is because uncontrolled diabetes for a long time will affect the nerves in the feet. And there is a condition called diabetic neuropathy, which occurs very early in diabetes. Even after 2 years of diabetes, you can get loss of loss of sensation in the feet. So uncontrolled diabetes can lead to neuropathy. And there is a second factor about which we'll talk later, blood vessel disease in the feet. So that we will talk about later. So after this introduction, I would like to ask Dr. Ashu Rastogi, what do you think, Ashu, is the most common problem of foot problems in India? Dr. Ashu Rastogi. जी सर। तो मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगा, बीच-बीच में मैं इंग्लिश भी बोलूँगा क्योंकि जैसे कि ज़्यादातर ये पेशेंट्स और जनरल पॉपुलेशन के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है। तो हमें पता है कि हमारे देश में इस टाइम करीब 8 करोड़ लोगों को शुगर है और हर एक के अगर 2 पैर हैं तो हमें 16 करोड़ पैरों का देखभाल करनी है। और इसमें मैं अगर ये कहूँ कि सबसे कॉमन कॉज़ जो फुट प्रॉब्लम का है हिंदुस्तान में, वो जैसे कि सर ने बताया, वो है हमारे पैर का सुन्नपन हो जाना। यानी कि हमको या मरीज़ को अपने पैरों में किसी भी तरह की सेंसेशंस नहीं मिलती हैं। और ये ईश्वर का एक वरदान है कि मुझ में और आप में जिनको शुगर नहीं है, उनमें ये कुछ भी ज़रा-सी भी चीज़ चुभ जाए, हम तुरंत अपना पैर हटा लेते हैं। पर अगर ये हमारे शुगर ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी लंबे समय तक अगर आपकी शुगर ज़्यादा है, तो आपके पैर की नर्व्स खराब हो जाती हैं और आप किसी भी तरह की सेंसेशंस आपके पैर में खत्म हो जाती है और इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। और ये माना जाता है कि करीब 60% से 70% जो लोग हैं शुगर के, उनमें इस न्यूरोपैथी की वजह से ही पैर में प्रॉब्लम होती है और सबसे कॉमन जो समस्या है वो है पैर में घाव होना। और ऐसा घाव
जो भरे ना, और इसका सबसे प्रमुख कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी ही है। पर हाँ, कुछ मरीजों में खून की जो धमनियां हैं जिसमें खून नहीं पहुंचता है पैरों में, उसकी वजह से भी घाव होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा फुट प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, तो वो पैर के सूनापन होने की वजह से है। सो अगर मैं इस बात को आगे ले जाना चाहूँ, डॉक्टर विजय अगर मुझे परमिशन दें, सो आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर कृष्णा। डॉक्टर कृष्णा, आई थिंक यू विल Hi, sir. बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश Yes, sir. Yeah, I'm comfortable in English. और हिंदी? Okay, sir. Either ways, both the languages I'm okay. ओके, So I can सो understand, but more fluent in English. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन योर प्रैक्टिस, हाउ ऑफन Sir. डू यू सी पेशेंट्स विद डायबिटीज हु आर हैविंग फुट प्रॉब्लम्स? Right, sir. Usually, of late, we have been seeing a lot of patients of diabetic patients with diabetic foot problems. There is peripheral neuropathy and there is chronic non-healing ulcer. But what I would like to, what I would like to inform the panelists, most often these patients who are coming back to us have this diabetic foot problems or ulcer problems, chronic non-healing ulcer problems, not owing to their mismanagement of diabetes. It is secondary to, they have an incidental trauma and they are not aware of their sensations in the foot, and most often the wound is neglected, and there are microcirculation problems. All these things attribute to them, and the disease per se, the disease burden per se is, initially when I started this podiatric practice, I used to see maybe around on an average of 15 to 20 cases per month pertaining to only diabetic. But of late, I've seen a number somewhere around 120 to 150 in per month, only contributing to diabetic neuropathy with diabetic chronic non-healing ulcers, which when not intervened are leading to disarticulations, amputations, which definitely require some sort of interventions. But otherwise, there are other causes. Most often, diabetic patients doesn't come within a single entity. They come with other cardiac problems, peripheral arterial disease, or CKD and all that. So I'm giving you the statistics pertaining only to the diabetic foot with wounds with respect to diabetic foot only. And sir, if you want me to take this forward, I just want to ask Dr. Ashu, what are the common symptoms and signs that patients with diabetic foot disease usually present with? तो ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ जो डॉक्टर है वो किस जगह बैठा हुआ है। अगर एक प्राइमरी केयर सेटिंग में बैठा हुआ है तो वहाँ पे जो पेशेंट आएंगे उनकी अलग समस्याएं होंगी, और अगर वो डॉक्टर किसी टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट यानी बड़े अस्पताल में या किसी इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ है तो वहाँ पे अलग तरह के मरीज आएंगे। तो अगर मैं सिर्फ प्राइमरी केयर या किसी गांव या किसी एक छोटे टाउन या छोटे शहर की बात करूं, तो वहाँ पे ज़्यादातर मरीज यहाँ तो कोई कंप्लेन बताते ही नहीं है कि हमको कोई दिक्कत है। अगर डॉक्टर उनका पैर ना देखे तो उसको पता ही नहीं चलेगा मरीज को कि कोई समस्या है भी। पर हाँ, अगर उसका पैर देखा गया है तो उसमें सबसे कॉमन सिम्टम ये होता है कि मेरे पैर बिल्कुल सूखे हुए हैं और इसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, और खास तौर पे हमारी उंगलियों की, पैर की उंगलियों के बीच में जो चमड़ी होती है वो बहुत ही पतली चमड़ी होती है, जिसे बहुत फ्रेजाइल स्किन भी बोल सकते हैं, और वहां से सबसे कॉमनली अगर हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो वहां से सबसे कॉमन घाव बनता है और जो पूरे हमारे पैर में फैल सकता है। इसके अलावा हमारे नाखून, जो डायबिटीज पेशेंट के जो नाखून होते हैं या तो बहुत थिक हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे नाखून जिसमें फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं हम, ऐसे भी कई मरीज आते हैं। कई मरीज ऐसे होते हैं जो अपने नाखून ज्यादा काट लेते हैं और उनके नाखून के कोने में एक छोटा सा घाव बन जाता है। इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके पैर थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, जिसको हमारी भाषा में डिफॉर्मिटीज बोलते हैं, जैसे कि एक किसी
मे बी चील के जैसे या बाज के जैसे पैर होते हैं, जैसे क्लॉटो बोलते हैं, जैसे उसके पंजे होते हैं उस तरीके से उसकी उंगलियां उठ जाती हैं और इसे क्लॉटो बोला जाता है। या उसका जो अंगूठा है, जो पैर का अंगूठा है, वो टेढ़ा हो जाता है। और ये सिर्फ इस वजह से होता है कि मरीज को शुगर है और उसकी पैर की नसें काम नहीं कर रही हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसकी वजह से ये दिक्कत होती है। कुछ मरीजों में ये भी देखा गया है कि वो हमारे पास आते हैं कि उनकी जो पैर के मध्य यानी मिडिल में एक ईश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी आर्च दी है, जो एक हमारा एक ब्रिज का काम करती है, जिससे कि जब हम चलते हैं तो हमारा एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है, जिससे कि हमारे आराम से हम चल पाएं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर डायबिटीज के मरीजों में जब उनको एक बीमारी होती है जिसको हमारी भाषा में शार्कोट बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे पैर का मध्य भाग यानी मिडिल पार्ट वो नीचे धंस जाता है और पैर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, और इस वजह से चलने में भी दिक्कत आती है और ऐसे मरीजों को घाव भी हो जाता है। तो इसके अलावा एक बहुत ही अलग तरह की बीमारी है जिसके भी मरीज हम लोगों के पास आते हैं, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ही बोलूंगा मैं, जिसमें मरीज वैसे तो ठीक रहता है पर जब चलता है, मे बी अगर 100 मीटर चलते हैं, 200 मीटर चलता है, तो उसको बहुत दर्द होता है पैरों में। और वो दर्द यहाँ तो हमारे काफ रीजन में होता है, यानी घुटनों के नीचे की मांसपेशियों में होता है, और इसे हमारी भाषा में क्लॉडिकेशन बोलते हैं। और ये एक साइन है कि इस मरीज के पैरों की जो खून की नालियां हैं वो बंद हैं, और इसको तुरंत एक डॉक्टरी परामर्श की जरूरत है या डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। पर ज्यादातर मरीज हमारे पास आते हैं जिनके घाव बड़े हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं, या जो घाव हैं उन्होंने कई इलाज ले लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो एक डायबिटीज के मरीज में पैरों से संबंधित इतने तरह के विकार हो सकते हैं, इतने तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं जिससे वो अपने डॉक्टर के पास जा सकता है। पर सबसे कॉमन, अगर मैं कहूँ सबसे कॉमन ये है कि मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका पैर शून्य है, उसको पता ही नहीं है। और कुछ ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं जिनके पैर में कील गड़ी हुई है। जूते में तो चलो कील हो ही सकती है, पर पैर में भी कील या पत्थर गड़ा हुआ है और मरीज को पता ही नहीं है, और वो बाद में घाव का कारण बनता है। तो ये कुछ प्रमुख साइन एंड सिम्टम्स हैं जो एक आम शुगर के मरीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और ये एक जो डॉक्टर एक शुगर के मरीज को जो देख रहा है, उसको भी सदैव हमेशा मरीज के जूते मोजे खुलवा के उसके पैरों को देखना चाहिए, तभी ये साइन एंड सिम्टम्स पता चलेंगे। तो इस बात को मैं आगे ले जाना चाहूंगा, एंड आई विल आस्क डॉक्टर विश्वनाथन that how exactly, sir, do we deal with someone who has loss of sensations and who have reduced blood supply to the feet? Yeah, so Dr. Ashu, thank you. So we are dealing with a problem which is called painful neuropathy, painful feet, and painless feet. So there are two conditions: painful condition, painful feet, painless feet. Now, painless feet. First, I will talk. Painless feet is very dangerous. No pain. Pain is God's gift to mankind. But people with diabetes lose sensation in their feet. So you have to protect the feet. So painless feet has to be protected. So I'll give you an example. If you're going to a temple, I cannot say that you should not go to a temple. I cannot say you cannot go to a mosque. You should not pray. I can only say protect the feet when going to a temple. You can wear socks. I don't think any temple or mosque will prevent you from wearing socks and entering. But protect the feet. You have to protect the feet in painless feet, which is due to neuropathy. Then there is a condition called painful feet. Painful, where there is less blood flow, where there is burning sensation, pricking sensation. That is little easy because you can give tablets. There are tablets like pregabalin, gabapentin. You can give and reduce the pain. If there is less blood supply, which we'll be discussing later, we can do angioplasty, improve the blood flow. So if you ask me, painful feet is little easy to deal, but painless feet is very difficult. We need the cooperation of the patient. While walking in the beach, for instance, we like to walk without footwear.
You should not. If you have a painless feet, if your doctor, diabetologist has told you that you have no sensation of the feet, you cannot walk barefoot even inside the house, not only on the beach, not only in the temple. You cannot walk barefoot. You should wear socks. You should examine the feet every day with a magnifying glass. If you can't bend down, you ask somebody else in your family to examine the feet for small cracks, small ulcer. So, painless feet and painful feet, two types are there. The painless feet is very dangerous. Painful feet is a subjective feeling. The patient feels pain. It is dangerous. I do agree, but painless feet due to neuropathy is much more dangerous. So my next question to Dr. Vattem, Krishna Chaitanya Vattem, is we are talking now. We are going into blood supply. So what basic tests are recommended for people who have less blood supply in the feet? When do you decide they are needed, and what screening test do you need at what frequency? Blood supply to the leg. Yes, right, sir. Thank you. Uh, so there are primarily patients who come to my OPD with respect to reduced diabetic foods. Initially, clinical. It's most often it is the clinical sign. We check for DPA, popliteal, femoral. We check for any other clinical manifestations of ulcers or blood supply irregularities and all. Apart from that, what I usually recommend is getting a peripheral arterial Doppler, which is the diagnostic test, which gives us the more insight into the circulation of volumetrics and all. Apart from that, if suspecting if I can't feel DPA, they said there is biphasic pattern in the DPA, or this DPA is not felt or seen or recorded in the Doppler, then I would like to advise for a CT peripheral angio. See, most often these patients usually have a long-standing progressive disease, wherein the blood supply gradually dampens off, decreases off. So initially, when the flow is when there's sugars are pretty much in control and early diabetes, they don't have much of a decreased flow, or they don't have any compromised vascularity. But in long-standing patients who have, provided they have altered blood lipids level, altered cholesterol level, and with atherosclerosis formation, all these things will lead to decreased flow, reduced vascularity, microangiopathy, and that leads to diabetic foot. Apart from that, I would also recommend getting a venous study also for them, because what I've noticed for the past few years, these patients, apart from who have developed cellulitis, they have a either because of anticoagulants or peripheral venodilators and all, they have developed peripheral venous pooling. They have varicosities. To certain extent, varicosities are present in them. So, to rule out, whether to rule out it's a ulcer, chronic ulcer, which is not healing at all, and these are certain tests that I would like to get it. Most of the time, it is clinical. So most of the time, we see for the peripheral pulsations, we see for the vascularity, we see for this color change. We just get an idea the extent of limit of decreased vascularity in those foot as well. And what frequency? See, initial screening tool is only at the time of first when a patient walks into my OPD, and the regular screening protocol is depending upon the progressive of the symptoms. Ideally, it is not after 3 months. Within 3 months, we don't see it as an urgency
to repeat the Doppler studies. But as the wound or if there's a wound, status of the wound. If there's no wound, it's just the skin discoloration and decreased GPA to assess the extent of neuropathy. And if the symptoms are progressing, then we recommend rescreening of the Doppler studies. Usually not after 3 months, and usually the frequency can go up to 6 months. And depending upon the patient symptomatology, we can recommend intervene when and where required. Uh, my question to Dr. Ashu is it important to have good control of diabetes to avoid food problems? Are there seasonal variations? Can you comment on the lifestyle changes also, if you could in brief? Over to you, Dr. थैंक यू डॉक्टर कृष्णा। तो जैसे कि सवाल ये है कि क्या शुगर की बीमारी जिसमें शुगर ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें तो क्या हम फुट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं? तो इसका आंसर हाँ है। और ऐसे बहुत बहुत सारे स्टडीज हुए हैं दुनिया में इंडिया में नहीं, इसके अलावा इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत जगह स्टडीज हुए हैं जहाँ ये देखा गया है कि जिन लोगों की शुगर काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहती है, उनमें डायबिटीज संबंधित जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो कम होते हैं। जैसे कि अभी हमने शुरू से ही हम बात कर रहे हैं कि एक डायबिटीज के मरीज में पैर की प्रॉब्लम होती क्यों है? ये न्यूरोपैथी की वजह से होती है, ये वस्कुलोपैथी की वजह से होती है, और इन दोनों का प्रमुख कारण है शुगर का ज्यादा होना। तो अगर शुगर कंट्रोल किया जाए शुरू से ही, जिसको हमारी भाषा में एक HbA1c का टेस्ट होता है, जिससे आपके 3 महीने की शुगर का एवरेज पता चलता है, अगर वो आपके 7% के लगभग है, तो ये देखा गया है कि उन मरीजों में डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की संभावना बहुत कम होती है और इसको हम रोका भी जा सकता है। और अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो भी गई है तो उसमें उसका प्रोग्रेशन यानी उसका खराब होना भी रोका जा सकता है अगर हम शुगर का संपूर्ण तरह से ध्यान रखें। और इसी के साथ एक और स्टडी जो बहुत ही सबसे ज्यादा दुनिया में जिसके बारे में बात की जाती है, जिसको हम यूकेपीडिया स्टडी बोलते हैं, उसमें भी ऐसा कहा गया है कि जिन मरीजों का शुगर काफी बेहतर रहता है, चाहे शुरुआत से ही जब शुगर पहली बार पता चला और उसके बाद से हमने शुगर का पूरी तरीके से ध्यान रखा, हमने अपने खाली पेट की शुगर और भरे पेट की शुगर जो एक हम टारगेट रेंज लेके चले उसमें रही और A1C भी हमारा 7% रहा, तो उनमें पैर कटने की संभावना भी बहुत कम होती है, ये भी देखा गया है। और इवन 40 से 42% कम थी उन मरीजों में जिनमें शुगर बिल्कुल ठीक था, वनस्पत उन मरीजों में जिनमें शुगर काफी ज्यादा था। पर हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए इसमें कि अगर आप किसी मरीज के पैर में घाव हो गया है तो शुगर कंट्रोल तो जरूर रखना चाहिए, पर अभी भी कोई ऐसा स्टडी नहीं है जिसने ये बताया गया है कि अगर आप बहुत एग्रेसिवली किसी मरीज की शुगर कंट्रोल करें तो उसका घाव जल्दी भर सकता है। ऐसा नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमको अपने शुगर का ध्यान नहीं रखना है। तो हर मरीज जिसको शुगर है उसको शुगर कंट्रोल करने से ही डायबिटीज में पैरों की समस्या का निदान पा सकता है। दूसरा सवाल जो डॉक्टर कृष्णा ने पूछा कि क्या सीजनल वेरिएशन होते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं जैसे नॉर्थ इंडिया में हूँ जहाँ पे जाड़ों में टेम्परेचर हमारे यहाँ 4 डिग्री 5 डिग्री भी हो जाता है। और अभी मैं डॉक्टर विजय से बात भी कर रहा था कि कुछ ही समय पहले, करीब 7-8 दिन पहले, हमसे करीब 15 किलोमीटर दूर स्नोफॉल भी हुआ है। तो जाड़ों में टेम्परेचर इतना कम रहा होता है और गर्मियों में 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ये पेनिनसुलर इंडिया जो कि मुंबई है, चेन्नई है, यहाँ पे एक टेम्परेचर वेरिएशन कम है, यानी सारा टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में रहता है या 25 से 35 डिग्री के बीच में रहता है। तो हमने ये देखा कि जाड़ों में, यानी जब टेम्परेचर हमारे यहाँ तापमान 5 डिग्री 8 डिग्री रहता है, तो हम गैंग्रीन बहुत देखते हैं, यानी जो मरीज जिनके खून रुक जाता है। और ये इसलिए होता है कि हमारा जो बॉडी का कोर पार्ट है, हमारा शरीर उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पेरिफेरल पार्ट, यानी जैसे कि पैर है, हाथ है, नाक है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल वो सिकुड़ जाते हैं। जब वो सिकुड़ जाते हैं तो वहां पे खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है, इस वजह से गैंग्रीन हो जाता है। तो ये एक नोन फाइंडिंग है, इंडिया में नहीं, इवन जो ठंडे देश हैं जैसे कि इंग्लैंड है या जो स्वीडन वगैरह है, वहां पे भी जाड़ों में गैंग्रीन के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
इसी के साथ एक और गंभीर समस्या जो हमने जाड़ों में देखी है वो ये है कि लोग, मरीज के जब पैर ठंडे होते हैं तो अपने पैरों को सेकने लग जाते हैं, और हीटर है या अंगीठी है या आग है उसके पास अपने पैरों को ले जाते हैं, परंतु उनके पैरों में सेंसेशन होते नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे पैर गर्म हो गए हैं। तो हमने ऐसे भी देखे हैं जाड़ों में जले हुए पैर या जिनमें बर्न होते हैं, ऐसे बहुत सारे मरीज जाड़ों में आते हैं। पर इसका एक विपरीत यानी अपोजिट एक और सिनारियो है गर्मियों में। जैसे कि डॉक्टर विजय ने कहा कि लोग नंगे पैर मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो जब वो गर्मियों में जब 45 डिग्री तापमान होता है तो फर्श बहुत गर्म होता है, तब हमारे पास वो बर्न्स या पैरों में घाव लेके आते हैं जो फिर पैरों के जलने की वजह से होता है। तो यस, मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, सीजनल वेरिएशन होते हैं और इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन जो डॉक्टर कृष्णा ने पूछा वो है लाइफस्टाइल के बारे में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये शुगर एक लाइफस्टाइल बीमारी ही है, और ये लाइफस्टाइल बीमारी लाइफस्टाइल को ठीक करके ही ठीक किया जा सकता है। और सब जानते हैं कि अगर आप वॉक करें प्रतिदिन, अगर 30 से 45 मिनट वॉक करें, 150 मिनट एक हफ्ते में वॉक करें, तो आप अपनी शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं। पर हाँ, ये पैरों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये देखा गया है कि मोटे लोगों में पैरों में प्रेशर ज्यादा होता है, मोटे लोगों में एक और बीमारी जैसे शार्कोट से वो ज्यादा होता है, मोटे लोगों में जो घाव भरने की संभावना है वो कम होती है। इसलिए वजन कम रखना जरूरी है, परंतु ये ध्यान रखें कि अगर पैर में घाव है तो आप वॉक ना करें। उसके लिए हमको आप पहले ट्रीटमेंट लें, अपने डॉक्टर का परामर्श लें। और इसी के साथ एक और बीमारी है जिसे शार्कोट्स बोलते हैं, उसमें आपके पैर की हड्डियां टूटने लग जाती हैं, और इस बीमारी में खास तौर पे हम डॉक्टर लोग आप लोगों को समझाते हैं कि आपको चलना नहीं है। तो लाइफस्टाइल में चलना जरूरी है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, पर अगर पैर की समस्या है तो अपने डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। अगर वो कहें कि चलना नहीं है तो आपको नहीं चलना है, पर हाँ, खान पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो ये लाइफस्टाइल के बारे में था। और अब मैं वापस डॉक्टर कृष्णा से पूछना चाहूंगा कि आपको when do you feel and that a surgeon should be involved in the foot disease, and at what point should a surgeon be consulted for management of foot conditions? Dr. Krishna, please. Right. Uh, surgeons involvement in a diabetic foot is essentially at an initial stages, early as possible, but until unless there are no clinical changes in the foot, or there are no symptom, patient doesn't feel, if the physician feels uh, he hasn't developed neuropathy, if there are no peripheral skin ulcers, or if there are no wounds, or if there is no skin discoloration, then I don't see a point consulting patient. But once there is obvious skin changes, obvious skin color changes, obvious there is disparity, there's a gait disturbances. There are usually most of them, as we see in charcot joint, the skin and subcutaneous tissue, everything looks okay. There won't be any ulcers, but there is joint deformity. There are brittle bones. There are multiple fractures involved, where we don't have much choices to do with them. We just have to intervene, or to improve their lifestyle. We just have to, they may have to undergo amputation. Then look into their changes. As a surgeon, I would like to see these patients even before the symptoms have started, even before they have, even before the ulcers have formed, even before the symptomatology of neuropathy has started. I would like to see these patients at a baseline level, at a first stage, where the clinical stage of the patient of the diabetic foot, how does his feet look like, what are his sensations like, what is, and a base level understanding of the patient, followed by if there is some infections, or if there is some swelling, edema, if there's an edema, erythema, induration, or there is an ulcers, or there's a painful foot problem, if has difficulty in walking. So I think these are the indications where we can just involve a surgeon as well. Moving on to course, I would like to ask Dr. Vishwanathan sir, uh,
So, what are the research study findings in India about prevention of foot problems? What precautions should be taken by patients to avoid infections? Can you We brief it just up? have another 3-5 minutes left, so I will Yeah, just very brief. So the thing is, the important study which we did in India was published in a journal of API some 8 years ago, where we looked at amputations happening in India, and we found that the major cause for amputation in India, this was done in 31 centers across India, and we published it in JAPI, Journal of API, that the commonest cause for amputation is infection. So the second question was, how do you prevent infection? So one of the commonest causes of infection, foot infection in people with diabetes, is walking barefoot and what is called injury to the feet. Second reason is the development of a callus. A callus is an area of thick skin under the first metatarsal head, here in the foot, not in the head. So, if you have a callus, the callus can be removed by a podiatric surgeon or by a surgeon. You should not walk barefoot, you can get injured. So, the two common causes of infection in India is one, walking barefoot, two, to avoid when you see a callus, remove the callus. Callus is not a good sign. Some people say it's a good sign. No, it's a bad sign. It shows high pressure. Peak plantar pressures are high. Callus has to be removed. So I think this is the uh, main reasons for amputation. And we have another 2 minutes left, Dr. Purvi. Can I ask one last question to Dr. Ashu? What is the Please rate go of ahead, sir. what is the rate of amputation and how do we prevent these high numbers? सर सिंपल आंसर, हर 30 सेकंड में एक पैर कट रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरी दुनिया में हर मिनट में 2 पैर कटते हैं सिर्फ शुगर की बीमारी की वजह से। तो इसको हम रोक सकते हैं। और अगर किसी को एक पैर या एक उंगली कट चुकी है तो अगले 1 साल के अंदर उसको 30% संभावना है कि उसका दूसरा पैर भी कट सकता है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। शायद हम डॉक्टर मिलके एक दूसरे से हाथ मिला के इस प्रॉब्लम का निदान पा सकते हैं, और इसका निदान तभी पा सकते हैं जब हम अपने मरीजों को ट्रेन करें, उनको समय दें, उनके पैरों को देखने के लिए समय दें, और उनसे हमेशा कहें कि प्रतिदिन अपने पैरों को जरूर देखें, जिसे हम डायबिटिक सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं या फुट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। कि मरीज अगर एम्पावर हो जाएगा तो शायद हम जल्दी से किसी भी फुट के विकार या फुट की प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। और हम कोशिश करें कि अपने देश में अगर ये फुट जो पोडियाट्री सर्विसेज हैं वो हम गांव तक पहुंचा सकें। अनफॉर्चुनेटली अभी भी पोडियाट्री सर्विसेज या पैर की समस्याओं के निदान के जो क्लिनिक हैं वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही हैं। तो ये कोशिश रहेगी RSSDI की भी कि हम गांव तक पहुंच सकें, और हर पैर, यानी जैसे मैंने बताया 16 करोड़ पैरों तक हमें पहुंचना है, तो हम सब मिलके जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू। डॉक्टर विजय प्लीज। So I think the last comment is I'd like to thank RSSDI for forming an RSSDI Diabetic Foot Task Force. They have created a task force. So thank you RSSDI for taking diabetic foot seriously. If you ask me, if there is one complication that is avoidable in a diabetic, it is a foot amputation. If there is one problem which is avoidable in a person with diabetes, it is amputation. Kidney, eye, heart, sometimes you cannot avoid, but an amputation can be avoided. So I'd like to thank Dr. Ashu, Dr. Urvi, Dr. Krishna, and the RSSDI for taking up diabetic foot seriously. Dr. Krishna, do you have a last word before we conclude? Yeah, thank you, sir, thank you. As you have already pointed out, there's nothing much from me to point out. Uh, Obviously, I completely am with this point that there's something that we can save. It's the limbs. Save as many limbs as possible. But having said that, even the patient have to come in handy. There, as you have already pointed out, stop going barefoot.
in regular examination of the foot and be in the regular strict sugar controls, lifestyle modifications, as we say, that's the most crucial thing. And the outset, thanks, Team RSGA for giving us an opportunity and helping us interact and giving us our insights and listening to us. Thank you, sir. Thanks, Dr. Ashu. Thanks, Dr. Krishna. थैंक यू डॉक्टर एंड आप सभी ने सुना कि हर 30 सेकंड में एक एम्पुटेशन होता है या एक पैर कटता है, और ये बहुत दुखजनक बात है क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेशन या जटिलता है जिससे जिससे हम बच सकते हैं और हमारे डायबिटीज के मरीजों को बचा सकते हैं. So with that, I hope you all found today's episode extremely informative and very, very knowledgeable, because I have thoroughly enjoyed it. I have listened to it all. And our three stalwarts who were there today, I must thank them on behalf of our central committee, the president, Dr. Vasant Kumar sir, and our secretary, Dr. Sanjay Agrawal sir, and the entire executive committee. And Professor Dr. Vishwanathan sir is a part of it. He's the vice president as well. But sir, thank you for sparing the time for this patient educative program that we had today. A big thank you to Dr. Ashu Rastogi as well, and Dr. Krishna Vattem. I'm very, very thankful on behalf of our entire RSSDI social media cell for you all to take the effort and be there today for such a wonderful and brilliant session in both the languages, English as well as Hindi. So thank you once again. Stay safe and stay happy. थैंक यू बाय बाय Thank you. Thank you. Bye.